Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from SK Designs. Welcome to the channel and welcome to the another exploring video. We are doing some graphic designing tools exploration and we are digging great down and we are finding great things all over the world जो web world wide web पे है. So I am back with another video जिसमें basically graphics designing को कैसे इजी किया जा सकता है और कैसे इजीली उसके फीचर्स को यूज़ किया जा सकता है नाउअडेज और सम काइंड ऑफ फ्री स्टफ्स आर देयर जो कि आपको बताना लाजमी है. सो with my research and with my knowledge I have listed a website which is called app.designwizard. You can see on my screen as well. और ये जो वेबसाइट है इस टोटली रिलेटेड एंड सेम एज द कैनवा और कैनवा के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है वो भी यहीं पे हो रहा है. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी वर डूइंग photo.com और आज के इस वीडियो में हम app.wizard डिज़ाइन कर रहे हैं designwizard.com. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. यू डोंट नीड टू बी हेजिटेट लाइक मी. सो लिंक को आप फॉलो करें, यू विल बी देयर. So after let me log in. I have already logged in with the email, so you can do that. और आफ्टर लॉगिन ये बेसिकली थोड़ा सा सिंपल सा इंटरफेस है इनका, नॉट मच कंफ्यूजिंग. और यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि यू हैव सम टेम्पलेट्स डिजाइन फॉर यू और यू कैन जस्ट गो टू टेम्पलेट्स एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम. सो लाइक दिस. सो बेसिकली ये बहुत सारी टेम्पलेट्स आपके पास हैं. few of them are like you can see the pro, but most of them are pretty simple. so यहाँ पे आपके पास ये है कि आप कस्टम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं. let's see I am getting let's see. okay, this is okay, 800 by 600 pixels. you can change the dimensions as well. लाइक उसको आप इंचेस में भी रखना चाहें रख सकते हैं और पॉइंट्स में भी रखना चाहे रख सकते हैं. सो दैट्स इट. दिस इज द इंटरफेस एंड इट्स प्रीटी सिंपल. यू कैन जस्ट चेंज द नेम लाइक न्यू फाइल. ओके, नेक्स्ट देयर आर द टेम्पलेट्स रिलेटेड टू द आर्टबोर्ड यू हैव. हम सर्च करते हैं ऑल टेम्पलेट्स, तो कुछ टेम्पलेट्स यहाँ दिखाई देंगे. ठीक है, और अगेन यहाँ पे आपके पास रीसाइज का ऑप्शन है. यू कैन रीसाइज एट एनी टाइम. ओके, यहाँ से फाइल सेव एंड दैट्स इट. ठीक है, और नीचे क्या है यहाँ पे हम ओपन करते हैं. सो हियर इज़ द सेम द टाइम लाइन जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है विद इन द यू कैन सी द कैनवा. ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई. लेट्स सी फेसबुक एड्स हम करते हैं. तो या फेसबुक एड्स आर देयर आप बनाना चाहें, या इफ़ यू वांट टू क्रिएट फेसबुक कवर्स, द कवर्स आर देयर एंड योर आइटम्स वुड बी देयर. लाइक आप कोई भी फ़ॉन्ट आप खुद से अपलोड करना चाहें या कोई भी फ़ोटोज़ आप करना चाहें, इमेजेस करना चाहें, वीडियोज़ करना चाहें. सो एलिमेंट्स आर देयर same as we do in Canva and other snapper like things. Text effects are there. so ये कुछ सिंपल सी वेबसाइट है जो बेसिकली कैनवा की तरह काम करती है. ठीक है, लेट्स सी हम यहाँ से कोई फेसबुक एड ही उठा देते हैं. लाइक दिस वन इज ओके. ओके, सो द डिज़ाइन इज हियर. I have to like arrange it and text is totally editable. ठीक है, आप कुछ भी लिखना चाहें. और सेम एज लाइक ये इमेज आई गेस इट्स नॉट द फ्री वर्जन. ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा वो कर रहे हैं. सो यू कैन सी कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं. इस प्रॉपर्टी पैनल इट अपीयर्स. आप इसको एनिमेट करना चाहें, ठीक है, इट विल एनिमेट लाइक दिस. ओके, आप इसको एनिमेट करना चाहें. ओके, लेट्स सी, देखते हैं. और यहाँ से हम इसको प्ले करके देख लेते हैं. ठीक है, तो ओके, इट्स ओके फाइन. सो फॉर सिंपल चीज़ों के लिए इट्स परफेक्ट. सो अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें, सो इट सेज कि आप प्रीमियम चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सो इट विल नॉट डू इट. So this image is I think premium. Okay, now it's saying. So yeah, you have to include your image and you can just use to animate it. So इसीलिए graphic design is totally not free of course on all sides. You have to learn some skills or you have some content. Like for content you can use
mixkit.com. okay, or either you can go for unsplash.com. यहाँ से आप अपने लिए चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक हियर यू विल गेट वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, टेम्पलेट्स, आइकन्स, ऑल स्टफ. और यहाँ से आप हाई क्वालिटी इमेजेस प्लस वीडियोस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इवन यू गेट सम टेक्सचर्स एज वेल, और पैटर्न्स भी आप ले सकते हैं विच यू कैन यूज इन योर डिज़ाइन. सो या दीज टू साइट्स are really awesome. I will give these links in the description as well, so you can get the things from there as well for your design. So yeah, I mostly use my videos for animations and other stuffs for After Effects from there. और यहाँ से मैं images लेता हूँ जो मेरे designs में mostly use होता है, because they are really high quality, they are mostly free of cost. So yeah, these are free of cost. About 80% इसके अंदर content आपका जो भी है they are free here as well. ठीक है, आपको 90% से भी ज़्यादा images and videos other stuffs आपको free में मिलेंगे. So these are really a bonus. Okay, even Pinterest is another website. It's really again a best a website or a web app for the designers. यहाँ पे आपको बहुत सारी ideas मिलेंगी. ओके, फिलहाल साइन अप रहने दें. ठीक है, इट्स रियली ऑसम. आप जो कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहें, लाइक इफ़ यू वांट टू गेट सम लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइंस, यू वांट टू मेक सम अदर डिज़ाइंस एज वेल, लाइक इस पे आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलेंगे. ठीक है, एक्सप्लोर आप करें. ओके, यू कैन सी a lot of things are there, arts are there, images are there. So yeah, these three sites are really awesome for the designers, so you can use these and it will be okay and easy for you. So yeah, that's it guys, explaining the app.design wizard, similar to Canva, and it's pretty simple as compared to Canva. So yeah, you can go with it and you can do your stuff. I think that's enough. I will be back with another video. Till then, take care and bye bye.